अब डेकार्ट के दूसरे मित्र लाइबनिट्स, ही इज ऑल्सो अ मैथमेटिशियन। लाइबनिट्स की फिलोसफी में द अल्टीमेट रियलिटी इज मोनाड्स। अब मोनाड क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस क्लास, वी विल डिस्कस इन लाइबनिट्स फिलोसफी। बट अभी के लिए मान लीजिए कि इनकी फिलोसफी में मोनाड इज द हाईएस्ट रियलिटी। और ये मोनाड, देयर मे बी अ मोनाड of an animal, monad of a human being. In the human being also there are various monads. So there is a hierarchy of monads. और ये मोनाड्स हमेशा प्रयास करते हैं अपने से ऊपर जाने के लिए। That is what he discusses in theory of appetition and theory of perception. एक तो ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और फिर अपने से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। आई एम जस्ट स्पीकिंग इन वेरी प्लेन टर्म्स। भाई जिनको फिलोसफी डिटेल में आती है प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आई नो दैट पार्ट ऑल्सो, बट अभी नहीं सिखाना है उसे। ओके, बट to explain this in plain terms is a better indicator of whether I know or not than teaching the technical part. So अब ये मोनाड हमेशा अपने से बेहतर होना चाहते हैं, हर व्यक्ति जीवन में अपने से बेहतर होना चाहता है, ये मोनाड भी चाहते हैं। ये कहाँ तक बेहतर होना चाहते हैं? देर इज मोनाड मोनम और मोनाड ऑफ मोनाड, वो कौन है? यस, गॉड। एंड एवरी हायर पार्ट is containing all the qualities of the lower part, or in Leibniz word, the higher contains the possibilities of the lower. जैसे आप भी सर्विस में जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपकी ट्रेनिंग के दौरान यू विल बी गिवन द स्मॉलेस्ट पोस्ट। इज आईएएस योर पोस्ट? No, sir. No. So your post will be, you will be maybe starting from a BDO, and then your first posting will be of an SDM. Then depending on which state you are, if you are in UP you will be CDO, you will be ADM, like that. You will become district magistrate after 4 5 6 years. Then you will be at विशेष सचिव और स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ऐसे करके आप बढ़ते जाएंगे। बट इजंट द सेक्रेटरी हैविंग all the possibilities of an SDM or all the learnings of an SDM? Yes. Yes, sir. तो इसी तरह से जो गॉड हैं उनमें सारी पॉसिबिलिटीज है ऑफ ऑल द लोअर मोनाड्स, बिकॉज ही इज द हाईएस्ट मोनाड और मोनाड समोनम और द मोनाड ऑफ मोनाड। तो इनमें से कहीं एक में विल एग्जिस्टेंस बी अ पॉसिबिलिटी? In any of the lower monads will existence be a possibility? Yes, sir. Yes. तो अब मैं तीन बातें लिख रहा हूं। सी दिस इज हिज ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट बट डिफरेंट फ्रॉम एंसेलम। लोग लाइबनिट्स को ऐसे ही चला देते हैं जैसे कि आप एक प्लेट गोलगप्पे का लेते हो और उसके बाद जो फ्री में ले लेते हो ना, वैसे ही लाइबनिट्स को भी चला दिया जाता है इन प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस। बट फर्स्ट लाइन इज दैट in his monadology the higher contains the lower. God is the highest or monad of monads, या हायर कंटेन्स द लोअर की जगह ऐसा लिख देते हैं, हायर कंटेन्स द पॉसिबिलिटीज ऑफ द लोअर।
God is the highest monad of monads. Existence is a possibility of lower monads. Therefore, can I write God exists or existence of God is a possibility? Yes. So this is his ontological argument. His ontological argument will be based on, it will be embedded in his metaphysics. आज आपसे स्पिनोजा पूछ दिया है, कल आपसे पूछ देगा हाउ इज लाइबनिट्स कंसेप्शन ऑफ गॉड embedded in his metaphysics. पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता? बोलिए भाई. Yes, sir. नहीं मानिए आप. बट इफ यू सी 2024 क्वेश्चन, सी question number 35, last question of the page. How does the notion of God in Spinoza's philosophy embedded in his metaphysics of substance and attributes? यहाँ पर मैं सिंपली 2 चेंजेस कर देता हूं. Leibniz philosophy in his metaphysics of monads critically discuss. आ सकता है कि नहीं? Yes, sir, definitely. फिर ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है. दिस इज सिंपली एप्लीकेशन एंड Leibniz conception of God. Okay. Let us discuss the cosmological proof of Leibniz. So cosmological proof of Leibniz, again, he is doing it from argument from law of sufficient reason. He's using causal proof, he's using contingency, but उन्होंने उसको explain again अपने तरीके से किया है. He says that everything in this world is contingent. This everybody else is saying. Even the universe is contingent. But he's saying every contingent truth is based on law of sufficient reason. Ab what is law of sufficient reason? Who will tell me? There are cause and effect. नहीं, not cause and effect. मतलब एक तरह से आप कह दीजिए कि cause and effect की wording है, लेकिन slightly different है. तो cause effect ही, but ऐसी बात हम नहीं कह रहे कि every event has a cause. Slightly different. What is it? But that they exist only because there is sufficient reason. Like anything in this exists only for a particular reason. Yes. That they only exist because of anybody else? तो किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कॉजेज या रीजंस होने चाहिए, और जब हाँ. तक वो रीजंस आपको पता नहीं चलते तब तक आप उसको एग्जिस्टेंस या फिर उसका वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकते. उसको हाँ. See, for anything to exist, there must be a valid explanation which fully explains why that event has happened. तब आप जो है, you will be talking about complete truth. But sort of that complete truth
you have to accept that thing based on sufficient reason. Sufficient reason मतलब उतना ही reason है which is enough not to contradict that thing or not to deny that thing. Okay, even Spinoza has kind of given this idea, but ये नाम नहीं दिया इन्होंने, नाम लाइबनिट्स ने दिया है कि generally we accept that every event has a cause. यहां पर तो हम एक यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर वी आर kind of saying something which is 100% indubitably true. But let us try to think some examples in our life from where we can understand. मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं और बार बार आपकी साइकिल का चेन टूट जा रहा है, तो what can be the reason for that? Yes. सर वन रीजन में भी लुब्रिकेशन नहीं हुआ हुआ चेन में. हाँ, maybe lubrication is not there, maybe the chain is loose, maybe the chain is old, etc. आपने मैकेनिक के पास लेके गए, मैकेनिक ने उसमें तेल भी डाल दिया, मैकेनिक ने उसकी चेन टाइट भी कर दी, फिर उस चेन को बदल भी दिया, फिर भी अगर आपका चेन बार बार उतर जा रहा है तो मैकेनिक विल से आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. बट व्हेन ही सेज आई डू नॉट नो व्हाट इज द रीजन, does it mean that the reason does not exist just because we don't know it? Yes. No, sir. No, sir. There No. will be a reason. Yes, there will be a reason. We are not able to know it. So can we therefore deny as it having no reason? Just as we are unsure of there being no exact reason, we are also uncertain of there being no exact no reason. So we will therefore say that there is sufficient reason that maybe something is faulty which is not being caught right now. अब इनकी वर्ड में एक इन्होंने एग्जैक्टली लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन को क्या बोला है वो लिख लीजिए. नो फैक्ट कैन होल्ड, नो फैक्ट कैन होल्ड or be real, and no proposition can be true unless there is a sufficient reason. Why it is so and not otherwise. अगर हमारे पास sufficient reason नहीं है for not otherwise, then also we cannot deny that thing, because there, according to this, there are unexplained facts. It does not mean that those facts are true, simply you don't know right now. So if you are saying God does not exist, he is saying God exists, only its reason right now you may not know. Because if God does not exist, the not otherwise part, to say God does not exist, what is your proof or argument for that? Okay, although he is not the first person, again I am saying it is given by Spinoza and even before that. So he says that अब यहाँ के बाद every contingent truth is based on law of sufficient reason. यहाँ तक जब वो बात कहते हैं तो यूनिवर्स का भी एक, यूनिवर्स की कंटिंजेंसी का भी एक सफिशिएंट रीजन होगा. बट मुझे ये बताइए, ये जो सफिशिएंट रीजन है, राइट नाउ वी आल्सो डोंट नो
even the scientists don't know what was the state at exact moment of Big Bang. Nobody knows. या Big Bang से पहले क्या था? Scientists know after 10 raised to power minus 17 seconds. Not minus 10 raised to power 17, sorry. हाँ 10 raised to power minus 17, मतलब 1/10:17 हो जाएगा ना. यहाँ के बाद की कहानी हमको पता है, मतलब 0.00000017 बार कर लो, उतने सेकंड्स के बाद की कहानी पता है, लेकिन उतने सेकंड की कहानी हमको नहीं पता, उससे पहले की कहानी नहीं पता. बट यूनिवर्सेस कंटिंजेंसी वी आर एक्सेप्टिंग बेस्ड ऑन अ सफिशिएंट रीजन. क्वेश्चन इज what will be the cause of this consistency? Will it be in the universe or outside the universe? Yes, the contingency for whole of universe, will it be inside or outside? It should be outside. It should be outside. This sufficient region which exists outside. What can exist outside of the universe? God. That sufficient reason is God. Although we will criticize कि ये मतलब वही टोपी आप किसी दूसरे नाम से पहना रहे हो, this is simply nothing but causation, cause effect. We will write in criticism. Okay, but his causal argument is based on law or principle of sufficient reason. वो principle क्या है और उसके argument everything is contingent, even the universe is contingent. Universe's contingency would have sufficient reason. This reason would exist outside of that universe. The sufficient reason for the universe is God. Understood this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next argument. Arguments based on eternal truths. Leibniz says that there are certain truths which are eternal. For example, 2 is equal to 2 or 4. 2 plus 2 is equal to 4. A is not equal to B. A is equal to A. So, law of contradiction, law of tautology, they are universal, accepted everywhere. But what is the locus of this? These eternal truths, they must have some locus. Can finite things or beings be locus of eternal truth? Yes. No, sir. No. So human beings cannot be, obviously material things, they are not intelligent. So the locus will always be some eternal intelligence. That eternal intelligence is God's mind. Therefore, God exists. So this is the argument from external truth. Now his teleological argument. Or argument from pre-established harmony. Now one comment I make in Western philosophy, that whenever philosophers are in problem, they will always take recourse of God. Philosopher क्या कोई भी, whenever you are also in problem, you will take recourse of God. So
Leibniz also, when he was asked why these monads are arranged in this manner, why only from higher to lower, why they are not going from lower to higher. So he says there is a pre-established harmony. There is an overall order. For example, the earth will rotate at a particular speed. Earth will be going around the sun. In a particular time. Monsoons in India, they will be coming in particular season. Rainfall will occur more in summers, less in winters. Forests are present more in rainfall areas. So we will find that there is a certain order in nature. ये order को सोचने के पीछे एक बहुत इंटेलिजेंट माइंड चाहिए. इसको समझाने के लिए there is a very simple argument given by Paley. वॉच आर्ग्यूमेंट. ये बताइए सेकंड की सुई का काम क्या है? अगर सेकंड की सुई ठीक नहीं चलेगी तो विल द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड वर्क प्रॉपरली? यस, yes or no? No, sir. No. So the second hand, it has a particular purpose to serve. The minute hand, it has a particular purpose to solve. The hour hand, therefore, is able to give the time. Or together they are able to give the right time. Instead of approx or assumed time, they are able to give the right time. So ऐसा ही ऑर्डर नेचर में भी है, ऐसा लाइबनिट्स का कहना है. The winds are flowing, why they are flowing? For example, suddenly Tibetan plateau will start getting heated up. This heating up of the Tibetan plateau will be one of the reasons for creation of low pressure or monsoon trough. ITCZ will be shifting up, then monsoon winds will be coming, then there will be rainfall. तो ये सब ऑर्डर या डिजाइन सोचने के पीछे एक जरूर एक इंटेलिजेंट माइंड होगा, जैसे कि इस वॉच के पीछे एक वॉच मेकर था. You can take your body also. Your eyes, they are designed in a certain way, right? Except human beings and apes, that is monkeys, chimpanzees, no other organism can touch their thumb with the other fingers. आपके घर में अगर बिल्ली, चूहा, डॉग होगा, देखिएगा, they will not be able to touch the thumb with their other fingers. And this is the reason why human being is the apex predator. One thumb. This thumb you can use while holding the pen. You needed the thumb to hold your index finger. अगर बाण चलाना है तो उसके लिए भी आपको थंब और एकलव्य का द्रोणाचार्य ने क्या मांग लिया था? यस, अंगूठा. अंगूठा. So human beings and apes, they are the only organism that can touch their thumbs with their rest of the fingers. So these kind of designs, the design of your eye, the rods and cones in your eye, all of them are designed in such a way. आप सोचिए इतना बढ़िया डिजाइंड है ये आपकी बॉडी, इसको ठीक कराने में you have to spend so much. एक सिंपल आपकी आंख का अगर फोकस पॉइंट गड़बड़ हो गया, you will have to wear specs or lens all your life just to correct where the image should be formed in your eye.
तो इसको कहते हैं टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट फ्रॉम टीलियोस और पर्पस। तो ये पर्पस सोच पाना एक इंटेलिजेंट माइंड की क्वालिटी है। ओवरऑल अर्थ का पर्पस कौन सोच पाएगा? वेयर everybody is working according to their mind, but they are all working according to the super mind or the plan of the God's mind. कहावत है ना हिंदी में, करते आप वो हो जो आप चाहते हो, होता वो है जो वो चाहते हैं. So that is a kind of teleological argument. Obviously by this sentence you can always make the argument that freedom of will is denied because you are merely a cog in this machine. If everything is happening by according to God's plan, then you are merely like a cog in the machine. आप सिर्फ उतना ही कर रहे हो जितना आपका रोल निर्धारित है और जितना किरदार आपको मिला है. You are simply a small figment in the simulation. That is what will be the criticism. और लाइबनिट्ज क्या कहते हैं कि उनके में जो मोनाड्स को कैसे कैसे वर्क करना है या क्या मोनाड्स में प्रोग्रेस हो रहा है, देयर इज अ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी. That order can only be by an intelligent mind. That mind is God. Understood the teleological argument? Sir, but he said he wants to reconcile with science, and here he's just rejecting science. So I said a sentence, no? These assumptions of God will create more problems than actually they will solve for these Western philosophers. So let us discuss the next argument, problem of evil. This is where I find Leibniz is most consistent than other Western philosophers in reconciling evil. बाकी लोगों से कम ये एक अच्छा आर्गुमेंट देते. ओके, तो पहले तो लाइबनिट्ज पे चार्ज क्या है कि भाई प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी है, एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय द क्रिएटर, द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड इज देयर, सो व्हाई डज इविल एग्जिस्ट? जब सारा कुछ गॉड के ग्रैंड स्कीम से हो रहा है, जो ग्रैंड स्कीम में फिर इविल कैसे आ गया? तो लाइबनिट्ज पहले क्या कहते हैं, ही डिवाइड्स इविल इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, metaphysical evil, physical evil, moral evil. Metaphysical evil, how does he explain? ये बताइए, does every monad have its limitations? Yes. Yes, every monad will have a limitation, क्योंकि तभी तो उनमें कुछ पॉसिबिलिटीज है जो उनमें नहीं है, तभी तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं. That is why there is appetition or they want to change into something higher. For example, you people are also sitting in this class because there is some physical and intellectual limitation. This I am not saying, Leibniz का argument है. He says that every monad is limited and cannot but suffer from physical and intellectual limitations. Otherwise तो वो फिर monads monum होगा. It will be perfect. It has reached its all possibilities. But that you are changing means that there is an imperfection, और उसको आप evil का नाम दे रहे हो. तो इसको वो कह रहे हैं metaphysical evil. Why? Every monad, it is limited,
That is why it is changing, and if it is limited, it cannot but suffer from its physical and intellectual limitations. भाई आज आप अर्थक्वेक से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो, इट इज योर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन. अब अगर यही आप पास्ट में जाते तो आप शायद अपने आप को रेन से नहीं बचा पाते थे. पीपल वर डाइंग फ्रॉम डायरिया, फ्रॉम प्लेग. टुडे, because your physical and intellectual limitations have increased, you are being saved from these diseases. Today, nature is no longer terrifying. Next is your physical evil, जो कि natural evil भी जिसको आप कह सकते हैं. तो ये कहते हैं कि pain educates and corrects man. Very similar to Aquinas' every punishment is a sin, a punishment for sin. But ये कहते हैं कि beauty is enhanced in a painting when there is shading. आप लोग भी करते हो ना कौन कौन सा panorama mode, this mode, that mode, where you click your picture in various shades, right? So he says the painting's beauty increases because there are various shades of colors. If the painting is in just one color, it would not look that beautiful. If there are shades of black, shades of gray, that enhances the beauty of the painting. Similarly, आपको भी तकलीफ दिया जा रहा है ताकि आपकी ब्यूटी उभर सके अकॉर्डिंग टू लाइबनिट्स. एंड मॉरल इविल का तो सिंपल आंसर है, इट इज गॉड गेव यू फ्री विल एंड व्हाट डिड यू डू? यस, Misused it. misused it. So of all the Western philosophers, Leibniz reconciliation or tackling of evil is problem of evil is much more logical than rest of them, except physical evil he is also not able to solve. So this completes Leibniz arguments. Leibniz के arguments समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए. We started from ontological argument, which he is explaining based on his monadology. The higher contains the lower, or higher contains all the possibilities of the lower. God is the highest possibility. Existence is a possibility, therefore God exists. Cosmological proof, proof from law of sufficient reason. Eternal truth, they should have some eternal locus. Teleological argument, there is a pre-established harmony. That kind of order would require an intelligent mind beyond all this. That intelligent mind is God. And then explanation of or reconciliation of evil with the existence of God. Any doubt? हाँ बोलिए. सर टेलियोलॉजिकल वाला एक बारी प्री एस्टेब्लिश हार्मनी वाला बताना सर. हाँ, teleological comes from the word teleos. अभी teleological argument हम डिटेल में पढ़ेंगे. teleos का मतलब होता है you are basing your actions on its consequence or purpose. जैसे एक तो हो गया कि आपको सुबह ऋतुराज 5 बजे उठना है ना. आप रात को 10 बजे सो गए, सुबह 5 बजे उठ गए. वन मोर थिंग इज देयर कि आपको सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए उठना है. फिर जब आप 10 बजे सो रहे हो तो व्हाट इज योर टीलियोस फॉर स्लीपिंग? यस, पढ़ाई करनी है सुबह. हाँ, तो दैट इज पर्पस. फर्स्ट इज अ कॉन्सिक्वेंस. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्लीपिंग अर्ली इज दैट यू आर गेटिंग अप अर्ली.
but the purpose of sleeping early is that you want to get up and study. So you are basing your actions based on some particular purpose in your result. तो वैसे ही जो यूनिवर्स की ऑर्डरिंग है, जो इंटायर यूनिवर्स का अरेंजमेंट है, अगर आप अर्थ का डिस्टेंस देखेंगे सन से, अगर मरकरी या वीनस के जितना बड़ा होता अर्थ, मतलब अर्थ जितना पास होता, या मार्स और जुपिटर के जितना बड़ा होता है, जुपिटर और बड़ा, चलिए, इट इज नॉट अप टू स्केल. If the earth was any nearer to the sun or any farther from the sun, would life have been possible? नो सर. No. इसीलिए इसको कहते हैं अर्थ इज इन द गोल्डीलॉक जोन. अब साइंस तो कहेगा कि भाई ये तो एक्सीडेंटल है, इत्तेफाक की बात है, बट डू सच कोइंसिडेंसेस अकर, और शुड सच कोइंसिडेंसेस अकर? आई डोंट थिंक सो. सो अब ये गोल्डीलॉक का जो डिजाइन है, ये किसी ऐसे माइंड के पास होगा कि जो कि पूरा सोलर सिस्टम देख पा रहा होगा कि कहां पर लाइफ पॉसिबल होगी, कितने दूर रखने पे. यस और यस सर. या तो इसका ऑल्टरनेट है कि हम ये मान ले कि हजारों प्रोबेबिलिटीज में से एक प्रोबेबिलिटी थी कि अर्थ यहाँ पे हो गई इसलिए लाइफ है. तो ऐसी प्रोबेबिलिटी और जगह भी होनी चाहिए, और अभी तक तो हमको मिली नहीं है, राइट? सो this shows that there is a very super intelligent mind which can see all these things and design all these things. वो उस पर्पस के साथ, वो उस पर्पस को सोच पा रहे हैं और उसके साथ वो क्रिएशन कर रहे हैं. सो बिग बैंग हैपेंड, एवरीथिंग हैपेंड so that Eve could steal the apple and then be penalized. So this kind of foresight can only be in a super intelligent mind. That mind is God. Therefore God exists. ठीक है सर. Comment लिखिए. Criticism. Leibniz ontological argument. Suffers from same Cartesian fallacy of treating existence as a quality. Second, sufficient reason appeals somehow to causation. Which has been criticized by Kant and Hume. The principle of causation can be applied only to what is given in experience. God is not an object of experience, is just an assumption. It is a masked version. Sir, is just an assumption. God is not an object of experience के बाद आएगा. क्या क्या? नहीं नहीं, Okay. pre-established harmony is just an assumption. Okay. Next point है, pre-established harmony is just an assumption. It is a masked version of argument from design. Which has been criticized by Hume.
if accepted, इसी में लिखिए if accepted, it leads to philosophy of determinism and denial of freedom of will. Sir, when he gave moral evil, isn't he contradicting his pre-established harmony theory? Correct. Yes, that also you can write. Very good. How can God allow for misuse of free will when there is no free will? Although the thing is, he has given his own conception of freedom of will. When we will study Leibniz philosophy, it is a very repeated question in Leibniz. बार बार ये सवाल पूछा गया है, is Leibniz philosophy deterministic? और how does Leibniz account for freedom of will in pre-established harmony? तो ऐसा मत सोचिए, इन्होंने freedom of will को भी explain किया है अपने तरीके से. But for now, you can definitely write this criticism that freedom of in pre-established harmony, there is no room for choice and therefore moral evil is not. लिख लीजिए, लिखवा देता हूँ. But only here I am saying there is a logical explanation according to Leibniz. Leibniz has given his own conception of freedom. But लिख लीजिए, if pre-established harmony is accepted, there is no possibility to choose या freedom to choose. Thereby negating moral evil, thereby negating the misuse of free will. And therefore, we will be using the sentence of a UPSC question. The responsibility of evil cannot belong to the human agent. यहाँ पर moral evil कर लीजिए. The responsibility of moral evil cannot belong to the human agent. So this completes Leibniz. Now come to Locke, Berkeley, and Hume.